Alright, in the 37th MCQ, in cash balance approach, there are dash sales and savings in an economy. तो बेटा सेविंग्स इन एन इकोनॉमी कैश बैलेंस अप्रोच में होती हैं एंड जो सेल्स होगा वो क्रेडिट सेल्स होगा बिकॉज मनी हैज अ स्टोर वैल्यू. So the answer for 37th MCQ is B for Bombay. Cash balance approach, there are credit sales and there are savings in the economy. So please mark the answer for 37th MCQ as B. The next one. Which of the following are functions of central bank? Central bank is a credit control. Yes. Banker to the government. Yes. Issuer of notes. Yes. So your answer will be all of these. The next MCQ, 39th. The central bank collects taxes and other payment on behalf of the government. मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई ने काम किया, मतलब आरबीआई इज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट. So in the 39th MCQ, your answer will be Bombay. RBI is acting as an agent because it is working on behalf of the government. The 40th MCQ. Leading instruments associated with general credit control measures are. तो जनरल क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, हाँ. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, नो. मार्जिन रिक्वायरमेंट, नो. बैंक क्रेडिट पॉलिसी, यस. So options 1 and 4 are general or quantitative measures. So your answer is B. 40th MCQ के लिए your answer will be Bombay. चलो next. 41. Money has overcome the difficulty of dash system. तो बेटा money has overcome the difficulties of barter system. Lack of double coincidence of wants, मेजरमेंट वैल्यू, स्टोर वैल्यू, इनडिविजिबल गुड्स, डेफर्ड पेमेंट्स, ये सब का प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में और मनी ने ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया है. सो योर आंसर फॉर 41st MCQ इज ए. द नेक्स्ट वन. मनी कॉम्प्राइजेस ऑफ डैश एंड डैश एज लीगल टेंडर. किसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है? तो इट हैज टू बी कॉइन्स एंड नोट्स जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. सो योर आंसर फॉर 42nd MCQ इज सी. द नेक्स्ट वन. नॉन करेंसी मनी डज नॉट इंक्लूड. इनमें से एक कौन सा नॉन करेंसी नहीं है? मतलब कौन सा करेंसी है? सो योर आंसर इज ए. Because paper note is not a non-currency money. So your answer will be A. The next one. The monetary unit used in calculation is called as unit of account. So your answer for 44 is A. हमने कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर पढ़ा था. मेजरमेंट वैल्यू के अंदर दो चीजें थी, एक कॉमन मेजर और एक यूनिट ऑफ अकाउंट. सो योर आंसर फॉर 44th MCQ इज ए. द नेक्स्ट वन. द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डैश व्हेन देयर इज डैश इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो बेटा द परचेजिंग पावर विल राइज when the prices fall. Therefore there is an inverse relationship and your answer is A. When the price falls, the purchasing power rises. So the purchasing power rises when the price falls. The next one. Money has a unique nature of dash and dash in value. So बेटा मनी के पास क्या है? ड्यूरेबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है. तो अगेन द आंसर फॉर 46th MCQ इज ए. मनी हैज अ यूनिक नेचर ऑफ नॉट ओनली स्टेबिलिटी बट ऑल्सो ड्यूरेबिलिटी. सो योर आंसर विल बी ए. द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग
इज और आर नॉट द फंक्शन ऑफ मनी। ये चार ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो मनी का फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन नहीं है। तो ट्रांसफर सेकेंडरी है, स्टोर सेकेंडरी है, डिफर्ड पेमेंट सेकेंडरी है, बट मेजर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी नहीं है, मेजर ऑफ वैल्यू प्राइमरी है। सो कैन आई से योर आंसर विल बी बी। Measurement value is not the secondary function of money, it is a primary function of money. The next one, which of these is a contingent function? तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू सेकेंडरी है, स्टोर वैल्यू सेकेंडरी है, मेजरमेंट प्राइमरी है, पर बेसिस ऑफ क्रेडिट टर्शियरी या कंटिंजेंट है। सो योर आंसर फॉर 48 is D for duck. The next one, the contribution of all factors are calculated in monetary terms. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब का मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म्स में होता है। सो योर आंसर इज ए। द नेक्स्ट वन, द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ एन आइटम टू बी रेडिली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट। मतलब कोई भी चीज आप मार्केट में प्रेजेंट कर दो, इट इज एक्सेप्टेबल, मतलब ये डस्टर में क्या है, लिक्विडिटी है। सो द आंसर फॉर 50th MCQ इज बॉम्बे। द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ एन आइटम टू बी रेडिली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी। I hope I am clear with that. The next MCQ. An item cannot be liquid unless it is marketable. हमने पहले भी ऐसा एक सिमिलर MCQ किया था। जब तक कोई कमोडिटी में मार्केटेबिलिटी नहीं होगा तब तक उसमें लिक्विडिटी भी नहीं होगा। So your answer for the 51st MCQ is B. The next one, very important, very interesting, very intelligent. Tangible assets are dash liquid. तो बेटा टेंजिबल असेट्स लिक्विड होते हैं कि नहीं होते हैं? एसी, गोल्ड, डायमंड, सोफा, चेयर, ये सब टेंजिबल असेट्स है, बट दे आर लीस्ट लिक्विड एंड डैश इज इट्स एक्सेप्शन। कैश इज एन एक्सेप्शन। कैश भी टेंजिबल है बट इट इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज नॉट द लीस्ट लिक्विड असेट. It is the most liquid asset. So I repeat the MCQ. Tangible assets are most liquid, but dash is its exception. तो बेटा क्या tangible assets most liquid है कि least liquid है? गोल्ड हाईएस्ट लिक्विडिटी है कि लीस्ट है? तो आपका आंसर आएगा सी. It is the least liquid, but cash is an exception. The next one, those assets which only have side capital gain and losses are called as dash assets. Fixed assets हो सकता है, हाँ. Current assets, financial and monetary assets हो सकता है, पर बेटा ये सारे assets को हम बोलते हैं near money assets. So your answer for 53rd MCQ is near money assets. Next one, liquidity of asset depends upon convertibility of an asset and the maturity of an asset. कितना इजीली कन्वर्टेबल है, कितना जल्दी मैच्योरिटी पे है, that is what defines the liquidity of an asset. So your answer for 54th MCQ is B for Bombay. The next one, and dash in the money supply by the monetary authority leads to a dash in the liquidity with the public. तो बेटा अगर मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाएगा तो आपका मनी सप्लाई भी तो बढ़ेगा. So can I say increase the money supply with public? If there is a decrease in money supply by monetary authority, it will lead to reduction in liquidity with public. तो आंसर आएगा both A and B. इंक्रीज भी सही है,
डिक्रीज डिक्रीज भी सही है। द नेक्स्ट वन, सेंट्रल बैंक वर्क्स फॉर सर्विस मोटिव एंड कमर्शियल बैंक्स वर्क्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। सो बेटा 56 एमसीक्यू के लिए आपका आंसर होगा डी फॉर डक। द नेक्स्ट वन, MV is equal to PT is given by Cambridge Fisher. तो आंसर has to be the Fisher. Answer is B for Bombay. The next one, if you have an ATM card of SBI and a balance of 12,000, you want to get money from the ATM of HDFC. You can get the money, but less than your balance. मतलब 12,000 से कम आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉवल्स आर अलाउड फ्रॉम अनदर बैंक्स ATM। द नेक्स्ट वन, पुअर ई बैंकिंग प्लानिंग। प्लानिंग गलत हो गया ई बैंकिंग का, तो वो कौन सा रिस्क है? स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिकॉज प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ मेकिंग स्ट्रेटजीज। सो योर आंसर फॉर द 59th MCQ is A. Next one, for which card one has to make an advance payment? पहले पैसा दो फिर आपको वो मिलेगा। तो बेटा आंसर इज अ स्मार्ट कार्ड, बिकॉज टू गेट अ स्मार्ट कार्ड यू हैव टू फर्स्ट पे देम, then they will give you the smart card. The answer is not gold card, debit card or credit card. Next one, 61st MCQ. The customer access e-banking services using PC, personal computer, PDA, PDA मतलब personal digital assistant. Please make note of that. PDA का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ATM का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सो योर आंसर फॉर 61st MCQ is D for duck. The next one, in credit card what is the grace period given? तो बेटा आंसर इज एनीवेयर बिटवीन 15 to 45 days। तो आपको 45 डेज तक का क्रेडिट लिमिट मिल सकता है। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी टाइप ऑफ वेबसाइट यूज्ड फॉर ई बैंकिंग इज ट्रांजैक्शनल। तो बेटा आपका आंसर फॉर 64th MCQ इज बी फॉर बॉम्बे। द नेक्स्ट वन, 65th, पिन इन ATM कार्ड ID। जो हमारा ATM कार्ड है उसका जो पिन नंबर होता है, सिक्योरिटी कोड नंबर होता है, वो कितने डिजिट्स का होता है? इट इज ऑफ 4 डिजिट्स। सो योर आंसर फॉर 65th MCQ इज C. द नेक्स्ट वन, द कार्ड बाय विच यू कैन नॉट बाय अ प्रोडक्ट इज डैश। क्रेडिट कार्ड से आपको सामान मिल सकता है, डेबिट से मिल सकता है, स्मार्ट कार्ड से आपको टिकट मिलता है, प्रोडक्ट गुड या सर्विस मिलता है, बट ATM कार्ड से आपको कोई गुड या सर्विस मिलेगा नहीं। ATM कार्ड इज ओनली यूजफुल टू विड्रॉ मनी एंड मनी इज नॉट अ कमोडिटी। सो योर आंसर फॉर 66th MCQ इज B. 66 के बाद 67th MCQ, Who can pass the law for e-banking? So बेटा बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी लॉ पास करना हो तो वो RBI करेगी। सो आपका आंसर आएगा A. The next one, loss of trust due to unauthorized activity on customer account is concerned with the reputational risk। क्योंकि अगर कुछ बैंक में ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए कस्टमर को, तो आपके बैंक का रेप्यूटेशन इज एट स्टेक। सो व्हेन द रेप्यूटेशन ऑफ द बैंक इज एट स्टेक, इट इज कॉल्ड एज एन रेप्यूटेशनल रिस्क। रेप्यूटेशनल बैंक के जगह पर वहां पर रिस्क कर दीजिए। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? क्वाइट सिंपल, आई थिंक वी डिस्कस्ड इट जस्ट 2 minutes अर्लियर। ATM इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, that is automated teller machine. Answer is A. बेटा अगर कोई बोल रहा है कि एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, then you are wrong.
The answer is automated teller machine. So with this, we have completed all the concepts in the chapter of money and banking, and we have completed the MCQs as well. Soon in my next video, I'll come up with my next chapter. I hope we are clear. I have already recorded 2 chapters. Please make sure that you are giving your best, putting in the best foot ahead and giving the best efforts that you can. All the very best to you. I'll see you in the next video. Thank you.